Yes, sir, you can start. Okay, Assalamu alaikum everyone. Today we will talk about hackathons. आज hackathon के बारे में ही डिस्कशन होगी और जिसमें मुख्तलिफ क्वेरीज जो हैं वो हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। hackathons में पार्टिसिपेट करना, hackathon की टीम बिल्ड करना और एट द एंड आई विल शेयर सम प्रो टिप्स और लाइक इस जर्नी में हम देखेंगे कि किस तरह से हम इंटरनेशनल टीम्स ज्वाइन कर सकते हैं और फिर जब हम एक्सपर्ट जो यूएसए के एक्सपर्ट हैं, पीजी स्कॉलर्स हैं जो जिनका तकरीबन 11 और 12 इयर्स तक एक्सपीरियंस रहता है, उनसे हम किस तरह से लोग गेट करें। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स our first slide. Okay, a little intro about me. My name is Mudassir Fayaz. Currently, I'm moderator at iQuid Guru, and I participated in more than 20 international events. So I've gained a lot of valuable experience, and I'm lucky to be a section leader at Stanford as well. And okay, so let's start with the hackathon. First of all, हम जानते हैं कि hackathon क्या होता है। हैकाथन एक इवेंट होता है जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के लोग, मुख्तलिफ बैकग्राउंड के लोग, डेवलपर्स, स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट्स, वो आते हैं, अपने आइडियाज़ लेके आते हैं और फिर उन आइडियाज़ पे काम करके आगे जजेस को या फिर जो लाइक वो आइडियाज़ को रिव्यू करते हैं उनको प्रेजेंट करके हैकाथन का वो डिसीजन करते हैं कि मतलब किस तरह कौन जीत रहा है हैकाथन को और किसने बेहतरीन आइडिया प्रिपेयर किया था और किसने बेहतरीन आइडिया और सोल्यूशन प्रेजेंट किया हुआ है। तो ये थोड़ी डिफिनीशन है हैकाथन की। और अब हम इंटरनेशनल हैकाथन लाइक probably hackathon event, like it could be national or it could be international. So in this workshop, we will be mostly talking about international events, international hackathon. We will not be focusing on the national Pakistani hackathons. There are many Pakistani hackathons and there are a lot of international events as well. सो इंटरनेशनल हैकाथन में तो दुनिया भर के ममालिक से लोग आते हैं, वो प्रेजेंट करते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं, वो आइडियाज़ लेके आते हैं और फिर वो आइडियाज़ आगे सबमिट करके प्रेजेंट करते हैं। तो इसके साथ साथ हम जानते हैं कि हु कैन पार्टिसिपेट इन हैकाथन, लाइक what are the specific skills needed for a hackathon, for a person to be able to participate in a hackathon. तो हैकाथन के लिए आपको सिर्फ पैशनेट होना चाहिए, आपका वो शौक हो कि आई रियली वांट टू पार्टिसिपेट इन हैकाथन्स, either if it's your first hackathon, even it's your if you are attending many hackathons, this thing will be common in your behavior, that you will be patient and also you will have a passion. आपकी शौक होनी चाहिए अगर आप हैकाथन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। इसके अलावा ये एक बेसिक स्किल है जिसके हेल्प से आप हैकाथन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा स्किल्स लाइक a communication skill, or like if you can prepare slides, these are the extra skill. Even if you are a front-end developer, this is plus point, and even if you are a back-end developer, this is also a very good point. You can go and you will be very valuable if you go with these skills, and you try to participate in hackathons. तो आपका एक्सपीरियंस और आपका बैकग्राउंड और आपके स्किल्स मैटर नहीं करते हैं हैकाथन में। सिर्फ और सिर्फ आप ये जाहिर करें, आपका जो टीम होगा, आपके टीममेट्स होंगे, उनको ये दिखाएं कि आप पैशनेट हैं, आप आपका पैशन है, आप चाहते हो, आप रियली वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस हैकाथन, और आप लाइक you really want to learn something and you really want to share your ideas with your team. So advantages of hackathon, I will cover these things later in this presentation, but this thing smoothly, like linearly increase your problem solving skill and collaboration with your team,
So these are there are a lot of advantages, but here I just want to focus the one that you will be able to solve real life problem with the technology solution, like with the technical solution. So our next slide is why hackathons are important. किसी का कोई question हो तो they can stop me and they can ask, and obviously we will cover a lot of question in the end of this session. But still, if you have any question, you can raise your hand and even you can ask in the chat. The moderator will read it and I will try to answer it. किसी का कोई question है? समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर, आपकी आवाज क्लियर है। ओके, और समझ भी आ रही है सबको? जी सर, समझ आ रहा है। यस सर। Okay, thank you. Why hackathons are important? So these are very few things that I've mentioned here. I will try to elaborate them. First of all, हम hackathons में जब participate करते हैं तो हमारी networking grow करती हैं. नेटवर्किंग किस तरह? हमारी जो स्पेशली लिंक्डइन का जो हम सब चाहते हैं कि हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल जो हो वो इतना अट्रैक्टिव हो कि प्रोफेसर्स, इवन इंडस्ट्री एक्सपीरियंस्ड पीपल रीच अस डायरेक्टली. सो इस वजह से हम चाहते हैं कि हमारा प्रोफाइल बिल्ड हो. इसके लिए नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है. तो हैकाथॉन्स आर द very important part where we can build our very valuable and precious networking. So there in hackathons you build relation with those who are like-minded to you. आपकी जो नेटवर्किंग बिल्ड होती हैं वो उन लोगों के साथ बिल्ड होती हैं जो लाइक माइंडेड होते हैं. जिस तरह आप सोचते हो उसी तरह वही सोचते हैं. जिस पेशेंट के साथ आप जाते हो हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करने के लिए, उसी तरह बहुत से लोग from different parts of the globe they come and participate in a hackathon. So इसमें बहुत ज़्यादा फन होता है. आप इंटरेक्ट करते हो, आप डिफरेंट तरह के लोग सुनते हो, आपको पता चलता है कि अच्छा कितना मुझे लर्न करना चाहिए और किस तरह से आप बहुत सी चीज़ें लर्न कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग. ये नेटवर्किंग बिल्ड होती हैं जब आप टीम डेवलप करते हो, टीम क्रिएट करते हो with international people, and then you connect with them on LinkedIn, on Discord, on many social media platform. So इसके साथ साथ स्किल्स डेवलपमेंट होती हैं. हमारी स्किल्स किस तरह से डेवलप होती हैं? सब जो hackathons होते हैं, currently there will be some hackathons, I haven't checked the Lab AI web portal, but there are hackathons still running. वहाँ पर hackathons जब जो भी कंपनी स्पॉन्सर करती हैं वो ट्राई करते हैं कि हम कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नई लाइब्रेरी, कोई नई अब आजकल तो NLP का दौर है, LLMs, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, राग, एडवांस जो अगमेंटेड राग जो है, एडवांस राग. तो इन चीज़ों का दौर है, AI, मशीन लर्निंग. तो इन चीज़ों से जो प्रॉब्लम्स वो एक लाइब्रेरी लेके आते हैं, वो फिर यूज़र्स को कहते हैं कि आप हमारी ये लाइब्रेरी यूज़ करके आप लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व करें. और वो एक थीम भी बता देते हैं कि इस थीम को लेके आप लोगों ने ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. तो वहाँ पर क्या होता है कि जब मुख्तलिफ कंपनी ये जो हैकाथॉन स्पॉन्सर करते हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं. फॉर एग्जांपल ओपन AI, और ये जो मेटा है, ये गूगल है. और हैकाथॉन्स तो MLH ने भी रिसेंटली हैकाथॉन लॉन्च किया था. और बहुत से स्पॉन्सर होते हैं. आई कांट रिमेंबर ऑल द नेम्स, बट स्टिल देयर आर अ लॉट ऑफ companies, there are a lot of startups. So they try to build their own solution and they really want to build their own startups. तो वो एक ऐसी लाइब्रेरी, ऐसी स्किल या ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आते हैं मार्केट में जो कि नहीं होती हैं. तो स्किल्स हमारे इस तरह से डेवलप होते हैं कि लोग हैं जो बहुत एक्सपीरियंस बंदे हैं, स्पेशली फ्रॉम USA, फ्रॉम Germany, and they really want to present and they really want to adopt this specific technology, and they they can present and they can solve a problem using their new technology. तो वो जब लोग होते हैं उनके साथ जब हम टीम अप करते हैं और वो
नई टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए जो न्यू प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो उससे हमारी ये ग्रोथ होती है कि हम नई टेक्नोलॉजी देख लेते हैं। और अगर फुली हम लर्न नहीं कर सकते हैं, लाइक कम से कम हम इतना जान सकते हैं कि लाइक ये किस तरह से हैं, ये कौन सी टेक्नोलॉजी हैं, और कौन सा स्पेसिफिक एरिया है जिसमें ये टेक्नोलॉजी हम यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह ये स्किल्स डेवलपमेंट हमारी बहुत लाइक अप टू डेट इन स्किल डेवलपमेंट हमारी होती हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑब्वियसली जब न्यू टेक्नोलॉजी आती हैं तो हम ट्राई करते हैं कि उस न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, हम एक स्पेसिफिक एरिया, लोकल एरिया, लाइक हम अपने इर्द गिर्द एनवायरनमेंट से कोई प्रॉब्लम लेके उसका सोल्यूशन प्रेजेंट करते हैं। और इसी तरह से हम प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो स्किल है वो अडॉप्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हैकाथॉन्स। और प्रोफाइल हमारी बिल्डिंग होती है। इट इज़ रियली वेरी ऑब्वियस, लाइक जब हम ट्राई करते हैं कि हम कोई वैल्यूएबल आइडिया प्रेजेंट करें, वैल्यूएबल सोल्यूशन लेके आए, तो जब वो लाइक हो जाएं, लाइक जो कंपनीज, जो जजेस होते हैं, वो आपके सोल्यूशन को, आपके यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी को लाइक करें, तो ऑब्वियसली यू यू विल एड दैट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट टू योर पोर्टफोलियो, टू योर प्रोफाइल। सो इसी तरह से आपकी प्रोफाइल बिल्ड होती हैं। और जो जबरदस्त और लाइक हम वी ऑल स्टूडेंट्स आर लुकिंग फॉर दिस थिंग, दैट इज द इंटरनेशनल LOR। वी आर लुकिंग फॉर LOR, letter of recommendation for our further study, for MS, for PhD। तो पहली बात कि हम जब टीम अप करते हैं, इसमें हमने ये केयर करना चाहिए कि हमारे टीम में एक इंटरनेशनल और एक्सपीरियंस बंदा हो, और उससे हम LOR जो है वो गेट करें। लिंक्डइन पे रिकमेंडेशन हम ले लें, तो इंटरनेशनल LOR पे मैं नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ कि किस तरह से आप लोगों ने ये LOR लेना है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हैकाथॉन्स का। और ऑब्वियसली जब हम लकी होते हैं, अब जब हम कोई सोल्यूशन प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम प्राइजेस और स्वाग, बहुत सी कंपनीज हैं जो लाइक एक किट बेचते हैं, मुझे भी भेजा गया है, और आई हैव वोन फ्यू हैकाथॉन्स एंड प्राइजेस। सो with these hackathons you get the chance to win something। और हमारा मेन फोकस यही होता है कि हम कुछ लर्न करने के लिए जाएं। Like this is one point, but we are not required to be focused on that one, that we will must earn something, or we will must get something. But this is like in hackathons you get a chance to win a prize or a swag। सो कम्युनिटी बिल्डिंग होती है, आपकी आपकी कम्युनिटी स्ट्रांग होती है, लाइक आपके माहौल में इस तरह के लोग आते हैं, आपके एनवायरनमेंट में इस तरह के लोग आते हैं कनेक्शंस में, कि आपके वो एक्सपर्ट होते हैं, जो जिस एरिया को आप चूज करना चाहते हो उस एरिया के वो एक्सपर्ट होते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि आपकी कम्युनिटी स्ट्रांग होती है, आपको जब भी हेल्प रिक्वायर्ड होती है। So I've seen, like I've contacted a lot of people even in my FYP. They do appreciate students when students approach them for their help, for their assistant। So इसी तरह के लोग आपके कनेक्शन में आते हैं, तो ये एक और प्लस पॉइंट है हैकाथॉन का। There are a lot of other advantages of these hackathons, but these are the most important one that I mentioned here। Okay, how to discover a hackathon and how to participate in a hackathon। तो हमारे पास बहुत से वेज हैं जब हम eagerly we want to participate in a hackathon। तो रास्ते बहुत आसान हैं। First of all, if you are a regular student of iCode Guru, then you can join the Slack channel of international hackathons। If you are not, the moderator will share the link in the chat. You can join our iCode Guru platform. There you will get a notification every month. We sponsor, like we notify students with 2 or 1 hackathon, and the international
हैकाथॉन्स चैनल। सो इस स्पेसिफिक चैनल पे आप नज़र रखिएगा। लाइक जब भी हैकाथॉन वहाँ पर आते हैं, हमारे moderators, they are really very cooperative. They help students. We especially help students to build their team, to build to be notified about a hackathon. तो हम हेल्प करते हैं स्टूडेंट को, बताएं कि ये हैकाथॉन है, इस हैकाथॉन में आप जाएं। अगर आपके स्किल्स ना भी हों, लाइक आई एक्सप्लेन्ड इन द फर्स्ट और सेकंड स्लाइड दैट आप सिर्फ पैशनेट, लाइक आपका इंटरेस्ट होना चाहिए कि आप हैकाथॉन में जाना चाहते हैं, बस आपके लिए ये काफ़ी है। लाइक आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं हैकाथॉन में। और देयर आर प्लेंटी ऑफ वेबसाइट्स दैट they regularly sponsor hackathons. So the most like important or famous one are leblib.ai and leblib.me. सो leblib.ai पे बहुत सारे हैकाथॉन्स होते हैं। वहाँ पर पास्ट हैकाथॉन्स भी होते हैं, वहाँ पर जो अपकमिंग हैकाथॉन्स होते हैं वो भी वहाँ पर लाइक लिस्टेड होते हैं। वहाँ पर आप जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो। और इसके साथ साथ जो थर्ड वन है, लाइक दिस ओमडिना और डेवपोस्ट, दीज आर अ बिट प्रो वेब पोर्टल्स आई वुड से। आप अगर आप बिगिनर हैं, आप रियली लाइक यू रियली वांट टू लर्न, इफ इट इज योर first, second, or third, or even fifth hackathon, then you should focus on these two areas, like the Slack channel of iCode Guru and these website, especially the leblib.ai. This is most famous one. और जब आपकी एक्सपीरियंस हो जाए, आप जब लाइक मोर देन 10 और 12 और 15 हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट कर जाएं, तो आप उसके बाद थोड़े लॉन्ग जो हैकाथॉन्स होते हैं उनमें जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो। लाइक ओमडीना एक वेबसाइट है जहाँ पर वो 8 वीक लॉन्ग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऑफर करते हैं। लाइक दे ऑफर फ्री हैकाथॉन्स। दीज आर लाइक लॉन्ग प्रोजेक्ट, और यू कैन से हैकाथॉन। वहाँ पर टीम की तादाद जो होती है वो अप टू 40, लाइक 40 डिफरेंट बैकग्राउंड से डेवलपर्स आते हैं, एक्सपर्ट्स आते हैं, वहाँ पर आप पार्टिसिपेट करते हो, तो आपकी सब टीमिंग होती हैं वहाँ पर। तो ये चीज़ आप लाइक जब एक्सपीरियंस आपकी हो जाए तो फिर ये आप एक्सपीरियंस कर सकते हो ये ओमडेना के प्रोजेक्ट्स। और साथ में डेव पोस्ट, ये भी बहुत डोमिनेंट हैं। लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ हैकाथॉन्स एज वेल ऑन डेव पोस्ट, you can search out that one as well. So these are the or three main areas where you can get notification about hackathons. And there are the on leblib AI, you can directly look at the teams. There are many pages of teams, like many sections where you can see like how many teams are there and who are the team creator and who is the team leader. Even you can contact from the leblib AI website directly with the leader of the team. So ये जो leblib AI है ये बहुत important है। इसको होपफुली किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लाइक इस वेबसाइट को यूज़ करने में। किसी को अगर हो तो आई कैन शो यू प्रैक्टिकली हाउ यू कैन लोकेट द टीम एंड हाउ यू कैन पार्टिसिपेट एंड हाउ यू कैन चूज अ टीम, और इवन हाउ यू कैन contact टीम लीडर। सो किसी का कोई लाइक किसी को है आइडिया लाइक? Sir, LabLab AI and LabLab.me is both are same. Is it your question? Yes, sir. ओके, liblib.ai ये मैंने तो आई वुड से कि liblib.ai पे मैंने एक या दो हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया है। ये इसका इंटरफेस अरेबिक में है, लेकिन ये जो हैकाथॉन स्पॉन्सर कर रहे होते हैं ये डिफरेंट होते हैं फ्रॉम liblib.ai। और liblib.ai जो है ये इंग्लिश में इसका ओवरऑल इंटरफेस है। लेट मी शो यू। liblib. Okay, so this is the interface of liblib AI. You can see like all of the hackathons are listed in English. So this is the label from where you can see if the hackathon is ended
or finished or it is ongoing or it is upcoming. Like यहाँ पर register का अगर बटन visible हो तो आप देख सकते हैं कि इनका डेट आगे आएगा और इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये जो हैं ये फिनिश्ड हैं, ये ओवर हो चुका है फ्रॉम 12 to 19, और ये भी आने वाला हैकाथॉन है। इसी तरह सारे जो आई थिंक नीचे जो हैं वो सारे फिनिश हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप लाइक क्लिक कर सकते हो। होपफुली ये तो किसी के लिए डिफिकल्ट नहीं होगा कि किस तरह हम हैकाथॉन में जाके रजिस्टर करते हैं या किस तरह हम टीम्स देख सकते हैं। और should Yes, I sir. show that? Okay. So this is the interface of liblib.ai, or this is the interface of liblib.me, और ये भी ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि एक ही कंपनी जो है वो डेवलप कर चुकी हैं इन दोनों वेबसाइट्स को, बट ये जो हैकाथॉन्स होते हैं ये डिफरेंट होते हैं। देखिए अब यहाँ पर कोई नया हैकाथॉन नहीं है, सारे फिनिश्ड हो चुके हैं। और ये स्पेशली यहाँ पर जो होते हैं वो अरेबिक जो लोग होते हैं फ्रॉम सऊदी अरेबिया, वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो ट्राई करना चाहिए, लाइक वी हैव टू एक्सप्लोर, वी हैव टू लर्न विद डिफरेंट पीपल एंड विद डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। सो दीज आर टू, एंड आल्सो दिस इज द इंटरफेस ऑफ डेव पोस्ट। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे हैकाथॉन्स होते हैं। यहाँ पर आप फिल्टर्स लगा के स्पेसिफाई कर सकते हैं, या ये बहुत ही बड़े हैकाथॉन्स जो होते हैं, और लाइक जो लेंथी हैकाथॉन्स होते हैं यहाँ पर वो लिस्टेड होते हैं। ये गूगल ने आई थिंक गूगल एआई हैकाथॉन गूगल ने स्पॉन्सर किया हुआ है, और माइक्रोसॉफ्ट का भी है, मेटा का भी है, अगेन गूगल क्लाउड का है। तो here we have a lot of sponsors and a lot of hackathons. तो इस स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म में जो हमारे पास टीम बिल्डिंग होती है वो डिफरेंट होती हैं। लाइक आपने जो बंदे होते हैं, जो डेवलपर्स होते हैं, उनको मेल करके बताना पड़ता है कि आप उनका टीम ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर वो आपका टीम ज्वाइन करें। तो कम्युनिकेशन थोड़ी डिफिकल्ट होती है। लेब एआई में तो डायरेक्टली वहाँ पर जिसके साथ भी आपने कंटेक्ट करनी हो उसका डेव जो डिस्कॉर्ड आईडी है या डिस्कॉर्ड यूजर नेम है वो वहाँ पर होता है। जब उस आइकन पे आप क्लिक करते हो तो ऑब्वियसली आपको मौका मिलता है कि आप कांटेक्ट करें उस स्पेसिफिक बंदे के साथ। तो मेरा दीज आर द क्वेश्चन है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। सॉरी। मेरा क्वेश्चन है इधर हम्म lablab.ai पर ना, तो उनका डिस्कॉर्ड चैनल है, वहां पर जाकर टीम में ढूंढ सकते हैं, लेकिन जो डेव पोस्ट है इसका क्या मेथड होगा? इसका जो मुझे लगा है कि बस ये एक ही मिला है कि उसमें आप डायरेक्ट उनको ईमेल कर सकते हो। जो मैंने एक हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया था, अभी ना इसका अपकमिंग एक हैकाथॉन है माइक्रोसॉफ्ट का, तो मैंने उसमें ना पार्टिसिपेट किया हुआ है। लेकिन उसमें ना टीम्स में ये थी कि जिनको टीम चाहिए थी मैंने उनको ईमेल्स की थी, लेकिन इसके अलावा कोई और मेथड इसका कोई डिस्कॉर्ड चैनल टीम ढूंढने के लिए डेव पोस्ट की? इट्स एग्जैक्टली द सेम मैम। यहाँ पर हम मेल करके पार्टिसिपेंट को बताते हैं कि आई वांट टू जॉइन योर टीम और यू कैन जॉइन माय टीम। तो we have this one option of mailing each other, like that I have seen. So हमारे पास यही एक ही वे है। तो ये यहाँ तक क्लियर है। ओमडीना, ये वेबसाइट ओमडीना है। लेट मी शो यू। यहाँ पर तो लॉन्ग लॉन्ग प्रोजेक्ट होते हैं। I think I have participated in 2 of them. Omdina. Can I ask a question, sir? यहाँ पर एक आपको of course you can. Sir, what I want to ask you is, I am in high code group. Could you check your mic, please? Okay, how is it? Mhm. Yeah, you're audible now. You can say, you can ask. So what I want to ask you is, high code group, national Ghana. There's some hack.
Your voice is distorting. If you could say it again, please. I'm not getting anything. किसी ने ये क्वेश्चन गेट किया, वो क्या कहना चाहते हैं? Okay, so these are two different sections on Omdina website if you want to apply for a project. But yeah, you here you can learn as well, but it is a very long project. It needs consistency. It needs regular communication with your teammates. Obviously, we are student. We are not capable of hosting a hackathon. Okay, so here आप देख सकते हैं innovation challenges होते हैं, local chapter challenges होते हैं. I have participated in these local challenges. You can explore this thing on your further. Okay, identifying potential areas of urban agriculture and Milan, Italy. So there are different areas they are working on. So when you click on that, they will show you an application. I'm randomly clicking on this one. They will show you apply button somewhere. If I could hardly remember that. I'm gonna challenge, find more challenges. Okay. Oh, application are closed. So you should check every project that you are interested on, and you should see if the application is open, then you can apply. If that is closed, then you can't easily. So this is the Omdina. There you can go and you can explore your knowledge, and you can learn a lot with the diverse range of developers and experts. यहाँ पर एक बहुत जबरदस्त चीज ये होती है कि यहाँ जो लोग आते हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस बंदे होते हैं, mostly from India, because our Pakistan is lacking in these things. But mashallah, Pakistan is now growing very rapidly, and I'm so happy for that. So you should explore this thing one day, and this is the Omdina. Okay, let me share my presentation again. So I hope these things will be clear to you now. Sir, can you check the chat? I have asked a question in chat. Oh, okay. Of course I should. Um, ओके। अच्छा, आपका इक्विट ग्रुप पे कितना टाइम हुआ? क्या आपने इक्विट ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है? हु इज दैट पर्सन? मोहम्मद अमीन। 2 months, ओके। तो इसी तरह के जो इवेंट्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हम स्पॉन्सर हम नोटिफाई करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। ये जो CS50 पजल डे हैं, वी पार्टिसिपेटेड इन दैट वन। ये इंटरनेशनल हैकाथॉन का जो सिलेक्ट चैनल है। I'm foreigner, sorry. Okay. All right, all right. So let me try to explain in English. All right, so if you are a part of iCode Guru and you have joined iCode Guru Slack, so there you will see a channel name. Let me show you. International Hackathons. That one. Here we notify our students to participate in different events like Stanford Code and Plays, CS50 Puzzle Day. So here we notify our students, and also not only notification, we also arrange different sessions where we help students, where we help our newcomers to participate, and we help them in every single step. Even if it is an application for something, or for a scholarship, or for the CS50 puzzle day, or even if it is a coding challenge, we help them solve it easily. So these are obvious, we notify our students here. But if you want to explore things on your own, then I showed you how you can find such places and how you can find many attractive and innovative projects that you can participate in and increase your knowledge. So I hope that helped you. All right.
ओके ये CS50 पजल डे जो है ये ऑब्वियसली साल में एक बार आता है ये मौका, और स्टैनफोर्ड कोड इन प्लेस का भी आपको वेट करना होगा फॉर 2025 and okay, should I shift to the next? Okay, here I have shared that how you can join and how you can participate, like how you can build a team. अच्छा यहाँ पर मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा लैब एआई पे स्पेशली. Okay, for now I want to participate in this one my way, like oh yeah, we have to oh my god, okay, all teams are visible. जो मेरी अप्रोच है, मैं किस तरह से लाइक टीम फाइंड करता हूँ और कौन सी टीम में मैं जाके पार्टिसिपेट करता हूँ, तो मैं दो चीजें जहन में रखता हूँ. एक इंटरनेशनल टीम, ऑब्वियसली आई वांट टू पार्टिसिपेट विद इंटरनेशनल टीम, आई वांट टू एक्सप्लोर एंड आई वांट टू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम देम. तो ये जो सारी टीम्स होते हैं ना, जितनी भी हो, क्योंकि मेरी क्यूरियोसिटी होती है, ये मैं न्यू टैब में ओपन करता हूँ. ओपन इन न्यू टैब, ओपन इन न्यू टैब, ओपन इन न्यू टैब, देन आई चेक एवरी सिंगल टीम and every leader. Okay, this one is from United States, and here is his contact or her contact, and here is her his Discord channel, Discord ID. So from here, I will write a very polite and a very nice and a very professional message to him that I really want to participate in your team, but this team is obviously full, like their sex members. And okay, so my approach is that I at least text to 12 or 15. It is like now I'm of course an experienced person when I tell them that I have participated in more than 20 hackathons and I have won a lot of them and I've led many hackathons, then they welcome me to their team. But if you are a beginner still, they will give you a chance to participate in their team. So this is the way, this is how I approach to the teams, and this is the way I join the international team. I always try to join somebody from Germany, somebody from United States, somebody from UK, and somebody even from Saudi Arabia. They're all good. So this is a tip that I wanted to share with you guys, so you could use it for your own advantage. All right. Okay, so there are two ways, like you can go on your own to the LabLab AI website. There you can join a team on your own by searching searching the profile of many people, and also you can join the Slack channel of iCode Guru. They will tell you like all right. Okay, so you can join the International Hackathon Slack channel on the Slack community of iCode Guru. So there you will be notified. Always read the text of that specific channel, because beginners, experts, and mid-level students will ask different type of questions, and of course these questions will help you a lot to how to handle different scenarios. Okay. All right. This is a very important section of my this presentation, that how we can get an LOR, and how we can gather international LORs and recommendations on LinkedIn. तो जब हम जिस तरह मैंने दिखाया कि फॉर एग्जांपल ये बंदा जो था जो यूनाइटेड स्टेट्स से था, तो मैं टेक्स्ट करूं और मैं बताऊं और वो मुझे मौका दें कि मैं उसकी टीम में पार्टिसिपेट करूं, तो आपने आईकोड गुरु की खातिर, आपने अपनी इंटरेस्ट की खातिर, और आपने पाकिस्तान की खातिर सबसे ज्यादा जो एनर्जी है वो शो करनी है स्पेसिफिक हैकाथन में. इवन आपको कुछ भी ना आता हो, आप
ट्राई करें कि मीटिंग्स में बोलें, मीटिंग्स ज्वाइन करें जो टीम के अपनी मीटिंग होते हैं कि हमने किस तरह से प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है, किस तरह से हमने थिंग्स प्रेजेंट करने हैं, लाइक हाउ वी हैव टू अचीव डिफरेंट स्टेप्स। सो आप बोलें, आप क्वेश्चन करें, आप इंटरेक्ट करें, आप टेक्स्ट करें जो लीडर हैं आपका। इसी तरह भी ना, लाइक in a professional way, you should interact with your leaders, with your team leaders, yeah, with your teammates even. तो कभी भी हेजिटेट ना करें। आपको हेल्प चाहिए हो और आप डर रहे हो कि यार अगर मैं कहूँ कि सर मुझे ये टेक्नोलॉजी नहीं आती है, या फिर मुझे एक स्पेसिफिक पोर्शन की समझ नहीं आ रही है, तो वो ऐसा ना कहें कि ये बंदा जो है इसको कुछ नहीं आता है। नहीं, don't hesitate to ask something. They are really very cooperative. So always find a good team and always ask for help. If you need a help, you should ask and try to clear the things. जब आपको खुद चीजें क्लियर नहीं होंगी तो आप किस तरह से प्रोग्रेस करोगे, या फिर किस तरह से आप एनर्जी शो करोगे कि मैंने ये किया या फिर मैंने वो किया। तो ऑब्वियसली आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। आपकी एक that is called like the communication, or what we call it, tight communication or something like that. I'm not getting the exact word right here, but this is the advantage of a communication with your team, that you won't have anything that you won't understand. So when you understand the whole idea, when you get the whole project, that what they are going to build and what is my role and how I will do that and when I have to finish that, then this is very good thing, like this is very good approach to start something building. Okay, तो समझ आ रही है? Please notify me, like tell me that I am talking to a live persons, like you guys are not sleeping, huh? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Obviously, sir, you समझ are आ audible. रही है। Okay, Sir, I have a all right, question. so sorry, I have a question. Our session is of 1 hour, if I'm not wrong. session, which session? I could That, guru, no, the meeting that we are doing right now. I don't know, the moderator will tell us. All right. Moderator, Ma'am Amna, how time we have, like how much time do we have? Hello. All right. Inshallah, agar questions रहते भी हो तो like we will try to answer them quickly, but सर you guys can ask. मेरा क्वेश्चन है Mhm, इसमें एलओआर में। Go ahead. मैंने जितने भी हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया तो मैंने तो अपने फुल एफर्ट किया कि उसमें चीज कोई टेक्नोलॉजीज ना भी आती हो तो उसको करने की, और मतलब फुल टोटल 100% किया मैंने उसमें। लेकिन जितने भी मेरे टीम मेंबर्स थे वो कोई, जैसे कि सर जफर कह रहे हैं कि हमें चाहिए कि जो यूएसए के प्रोफेसर हो उनके साथ ले, और उनकी कोई किसी की कंपनी हो तो उनसे ले एलओआर। लेकिन जितने भी मैंने हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया ना उसमें से कोई भी यूएसए का नहीं है। मींस के एक दो था लेकिन वो भी इनएक्टिव थे पर्सन, तो बाकी जो से थे ना वो डिफरेंट कंट्रीज के थे। तो दूसरा ये भी कि उनका कंट्रीज डिफरेंट थी लेकिन किसी एक का भी वो प्रोफेसर नहीं था, कोई भी ना ही किसी की कंपनी थी। तो उस लिहाज से हम क्या करना चाहिए? क्या एलओआर जरूरी है कि वो यूएसए से ही ले, या कोई और तरीका हो सकता है? क्योंकि मैंने अभी तक जितनी भी किया ना काम फुल 100% किया, लेकिन अभी तक भी मेरे पास एलओआर नहीं आया, तो उसके लिए क्या तरीका होगा? अच्छा, आपने कितने हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया है? लैब डॉट एआई के तो मैंने 4 हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया और एक डेव पोस्ट। Okay. अच्छा, wonderful. If I tell you that I got plenty of LORs after my 10th hackathon, जब मैंने 10 hackathon कंप्लीट किए उसके बाद मुझे आइडिया हुआ मेरी पिछली गलतियों से, मेरी पास्ट के एक्सपीरियंसेस से, तो मैंने जाके लाइक LOR लिए। और वो लाइक even if I show you the text of that person, he was from China, and he had done his PhD from USA, and he had his own startup in USA.
he told me, if you need an LOR, don't hesitate to ask. Like, he offered me. I said, oh, of course I would like to get your LOR. And he was happy, and like, he was a friendly person. I showed him that I am a very great asset of your team. So like, ये इम्पॉसिबल है अगर आप तो आपकी ऑब्वियसली जो अमाउंट ऑफ हैकाथॉन्स हैं ये थोड़ी लो हैं। आप ट्राई करें कि पॉजिटिवली जाएं, पॉजिटिवली आप चीज़ों को लें और कोऑपरेटिव रहें, पेशेंट रहें। तो I would say you will have multiple LORs. Now I have a lot of LORs. Even I am thinking that which LORs to send to the specific university. I'm selecting from my LORs. Like मुझे अब जानना है कि अच्छा ये LOR इस यूनिवर्सिटी के लिए ठीक है, या फिर ये LOR इस फलाने बंदे की LOR इस यूनिवर्सिटी के लिए ठीक है। आपके साथ इतने सारे LORs आ जाएंगे। तो आप पेशेंट रहें। आप ये जो मैं टिप्स मैंने दिखाए, होपफुली दीज विल हेल्प अ लॉट। तो इन चीज़ों को लाइक keep these things in mind and go with a positive thinking and participate in hackathons. Inshallah, you will have a lot of hackathons. Okay? Oh, sorry, a lot of Thank you. LORs. Okay, so किसी और का कोई क्वेश्चन? सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर जब LORs जब कहा जाता है उनको, तो उनके लिए कोई स्पेसिफिक कुछ ऐसे वर्डिंग मतलब रिक्वेस्ट की जाती है? इस तरह हम डायरेक्ट तो नहीं कह सकते जी मुझे आप रिकमेंड कर दें, कोई मतलब कोई ऐसा तरीका तो होगा जिससे वो चले हमने काम भी किया है और वो थोड़े से मोटिवेट भी हैं, लेकिन कुछ नहीं भी करते, कुछ कर भी देते हैं, तो इसके लिए कोई हाँ अगर टिप है तो। हाँ, ज़बरदस्त। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखें, जो हमारे पास टीम्स होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि लाइक हम जिस टीम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो जो टीम लीडर हैं वो यूएसएसी भी हैं, वो एक्सपीरियंस बंदा भी हैं, और फिर उसकी इंटरेक्शन विद द टीम दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, दैट मस्ट विल बी गुड। लाइक ज़रूरी नहीं है कि उसका रवैया ठीक ठीक ऑब्वियसली ठीक होता है, लेकिन फिर भी कभी कभार वो बिजी बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स नोट की हुई हैं कि जब आप 200% पुट करें अपने एफर्ट्स को, तो दे रियली वांट टू डू समथिंग फॉर यू। तो जब मेरा जो वे था अप्रोच करने का, जब मैं लाइक मैं इतना दिखा था, ऑब्वियसली आई हैव 2 years ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, आई एम अ वेब डेवलपर बाय प्रोफेशन। तो जब मैं लाइक वहाँ पर एफर्ट्स पुट करूँ और उनको भी लगता है कि वाओ दिस पर्सन हैव डन समथिंग अमेजिंग, तो वो खुश होते हैं। लाइक वो आपको लेसन कहते हैं फिर कि अच्छा आप क्या कहते हैं, वो आपके I don't know, I'm clearing your question, but still, when you put your 200% efforts, they really do want to listen to you. तो आपने तब क्या करना है कि आपने politely आपने politely पूछना है कि sir, I am studying, I'm a student, I need only one favor from you for my further study. Would you be um, would you be able to give me an LOR? Like इसी तरह से आपने ऑर्गेनाइज वे में एक मैसेज लिखनी है जो कि ना बहुत बड़ा हो और ना, और आपने ये भी मेंशन करना है कि सर आई वांट टू प्रोवाइड अ ड्राफ्ट दैट यू कैन रिव्यू एंड एडिट फर्दर टू ऑफर मी एन LOR। सो ये मेरा अप्रोच रहा, और जिस बंदे को भी मैंने यही कहा उन्होंने विलिंगली मुझे LOR दिए हुए हैं। और ये अमेरिकन जो एक्सपीरियंस बंदे होते हैं उनकी LOR, लाइक आई वुड से कि उनकी एक LOR और मेरी बैचलर्स की सारी जो एजुकेशन है वो मुकाबले में होती हैं। लाइक इतनी स्ट्रांग LOR वो लिखते हैं, इतनी डिटेल, और आपकी एक एक बिहेवियर को, आपकी कम्युनिकेशन को, आपने जो टेक्नोलॉजीज यूज की हुई हैं, इवन मैंने जिनके साथ काम किया हुआ है, जिनकी लोआर मेरे पास हैं, उन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से, इवन आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट ओ लाइक इतना एफर्ट करके वो ये लोआर लिख रहे होते हैं। तो ये बहुत ही आसान चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप लोग इसको समझें और इसको लाइक ट्राई टू अडॉप्ट लाइक द थिंग्स, द पॉजिटिव थिंग्स, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें जो हैं ये जब हम रेगुलरली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं हैकाथॉन्स में, जब हम लाइक एफर्ट्स शो कर रहे होते हैं, तब ये चीज़ें आती हैं।
जब amount of hackathons they really increases on our profile, तब ये चीज़ें आती हैं। तो ट्राई करें कि आप पहले ही हैकाथॉन्स में एलओआर ले लें, क्योंकि अगर आपके पास टाइम कम हो, इवन आई हैव स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन हैकाथॉन्स व्हेन आई वाज इन माय 6th semester, so now I'm in my 8th semester, so obviously I had a lot of time to participate in an international event and I found these things very interesting. So इसी तरह से आप लोग गेट कर सकते हैं एलओआर। और ओके, आई थिंक दिस वाज माय लास्ट स्लाइड। तो एक दूसरा बहुत जबरदस्त तरीका यही है कि जब आपको एलओआर मिले तो आपने उस बंदे के साथ कनेक्टेड रहना है, क्योंकि जब हम यूनिवर्सिटीज पे अप्लाई करते हैं वहां पर वो हमसे डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहे होते हैं कि आप वो एलओआर की डॉक्यूमेंट पेस्ट करें। समटाइम्स दे डू, बट most of the time they tell you that give us the contact information of that person who given you an LOR, so then you should give them the email address of that specific person. अच्छा, यहाँ पर अब अगर लेट्स से मैंने जो 10 महीने पहले एक हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया हुआ है और उस हैकाथॉन में एक बंदे ने मुझे लेटर दी हुई है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दी हुई है, और मैं 10 महीने बाद जो हूँ वो एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा हूँ, तो मे बी दिस पर्सन उसने वो मेरे बारे में भूल भी हो चुका होगा। तो इस चीज को हम किस तरह से कनेक्ट करें कि हमारी अट्रैक्शन भी हो, उस बंदे को पता भी हो कि हाँ मैंने इस बंदे को एलओआर दी हैं। अगर मैं मेरी इतनी ट्रस्ट हो कि अगर मैं इस बंदे की ईमेल पुट करूं अपने पीएचडी एप्लीकेशन में और एमएस एप्लीकेशन में, तो ये बंदा रिस्पॉन्स करेगा, ये एलओआर वहां पर पेस्ट करेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम उनके साथ कनेक्टेड रहें। कनेक्टेड रहने का बहुत ज़बरदस्त तरीका ये है कि आप जो भी अचीवमेंट करें, क्योंकि हम रेगुलरली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, इवन अगर आप हैकाथॉन विन भी ना करें तो भी बताएं कि hello sir, I participated in this hackathon and we solved this specific problem and we presented this solution. Here is the link, you could check it out. I am so happy for this hackathon, for this event, and I learned a lot. So obviously they will reply and they will say, wow, that is too good and you participated and you learned. This is my approach. I do this and I share my achievements and my daily updates, not daily, monthly, you can say weekly. Of course you should interact with them in a month, within a month, so they do not forget about you, that who is you, who are you, and so they will help you in your application when you submit your PhD application. तो ये बेहतरीन तरीका है, स्पेशल इवेंट्स हैं या फिर आपकी अचीवमेंट्स हैं, उनको विश भी करें, उनको बताएं कि आप एक्टिव हैं, आप इसी तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो वो आपके साथ कनेक्ट रहेंगे। Does it make sense? Yes, sir. All right. So I think this is the last slide of my presentation, and you guys can ask plenty of questions. And before moving towards the question, I would tell you that join us tonight for this outstanding webinar. Dr. Zafar will be joining us for this role, like how to join Google as a software engineer. And also, I think all of the students are from iCode Guru, and thank you for being here, and you can ask anything you want. Feel free to ask. Excuse me, sir. सर मेरा एक Yep, क्वेश्चन है ma'am. कि जब हम कोई मतलब अभी तक मैंने हैकाथॉन किसी भी में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन जब हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि डिस्कॉर्ड पे एक चैनल है, वहाँ पे आपने आपको इंट्रोड्यूस कराएं, और आपने ये कहा कि आप पहले टीम्स को सर्च करें, ठीक है, और वहाँ पे टीम लीडर चेक करें, तो वहाँ से टीम लीडर को जो है या डिस्कॉर्ड पे डायरेक्टली या लिंक्डइन पे कांटेक्ट करें। तो विच वे इज बेटर कि हम या डिस्कॉर्ड का जो ग्रुप है जहाँ पे सब लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वहाँ पे करें, या फिर इस तरह से कि उनको पर्सनली कांटेक्ट करें? All right. Okay. So do you know we have different recipes for making a dish? I would say rice. Like हम जब चावल बनाते हैं तो चावल बनाने के लिए कितने तरीके हो सकते हैं? Yes sir, so many. मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं ना।
तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, मेरा जो तरीका है आफ्टर पार्टिसिपेटिंग इन 20+ हैकाथॉन्स, आई वुड से दैट दिस इज द इफेक्टिव वे, लाइक जो मेरे लिए यूजफुल रही, कि मैं डायरेक्टली विद द टीम लीडर कांटेक्ट करूं, क्योंकि वो पार्टिसिपेट कर रहा है और मुझे पता भी है कि उसको टीम की टीम में बंदों की ज़रूरत भी है। तो मेरा यही अप्रोच है कि उसको लिंक्डइन पे भी मैसेज करूं और साथ साथ उसको डिस्कॉर्ड पे भी मैसेज करूं, और उसको ये रियलाइज करूं कि इवन इफ आई एम अ बिगिनर, आई रियली वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस हैकाथॉन एंड आई वांट टू लर्न एंड आई वांट टू एक्सप्लोर। सो दिस इज a recipe according to me. So you could try it. If it helps you, you can use it further. If it doesn't, then you can leave it. Mm-hmm. Okay, sir. Thank you so much. Okay. All right. You're welcome. जी अस्सलाम वालेकुम। Okay. Anybody? Walaikum हेलो। salam. जी ये क्वेश्चन Mm-hmm. मैं ये करना चाह रहा था कि व्हेन यू यू आर टॉकिंग अबाउट एलओआरस, तो ये एजुकेशन Mm-hmm. में जो लोग जाना चाह रहे हैं लाइक एमएस और पीएचडी के अंदर करना चाह रहे हो, तो उनके लिए तो चलें ये जरूरी है एलओआर। प्रोफेशनली ग्रो Mm-hmm. करने के लिए भी कोई एलओआर आपको चाहिए होता है, लाइक आप इफ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन अ हाँ. टीम हैकाथॉन के अंदर, तो आपको उनसे प्रोफेशनली ग्रो करने के लिए भी कोई एलओआर चाहिए होगा? Of course, you would need an LOR, but that would be in a form of this thing. Let me show you. लाइक हम Mm, जॉब करते हैं तो हमें एक्सपीरियंस लेटर मिलता है, तो Yep, इसको हम कैसे उसमें कर सकते हैं? I get your point, man. Okay, this is the LOR that you will need for your professional development. Mm, Let me show you. These are the things. अच्छा, ये जो बंदे हैं ना, इन्होंने मुझे रिकमेंडेशन दी हुई है। जो भी बंदा, जो भी प्रोफेसर हो, जो भी इंडस्ट्री का बंदा हो, रिक्रूटर हो, वो विजिट करे मेरे प्रोफाइल को और वो ये चीज़ रीड करें, तो दे रियली विल बी इम्प्रेस। और आपकी पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक आप अगर डेवलपर बनना चाहते हो, आप प्रोफेशनली ग्रो करना चाहते हो, नॉट इन एजुकेशन, नॉट इन रिसर्च एरिया, then you should get these LORs. These are called recommendations. Okay, you can give to somebody, you can get from somebody. And ये भी बता दूं कि ये जो बंदे हैं, इन्होंने मुझे लिंक्डइन पे रिकमेंड किया हुआ है। इन्होंने मैंने वो भी like for my PhD or for my MS, I haven't asked them to give me. So ये भी बंदे आपके लिए दोनों दोनों चीजों के लिए दे सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि अगर ये बंदा जो है ये इंडस्ट्री में आगे हैं, ये अगर मुझे लिंक्डइन पे रिकमेंड करें तो कितना वैल्यूएबल रहेगा। अगर स्पेसिफिक यही बंदा रिसर्च एरिया में आगे हैं और ये मुझे रिकमेंड करें in terms of LOR, letter of recommendation in a document form, how beneficial that will be. तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अप्रोच कर रहे होते हो। तो मैंने ना almost all of the students, they really want to grow and the educational area. So मैंने लिंक्डइन के रिकमेंडेशन पे ज़्यादा वो नहीं किया हुआ है, क्योंकि ये देखें, ये मेरी जो रिकमेंडेशन है ये 2020 नवंबर और जून में ये दी हुई हैं। तो I focused on the LORs that are needed for my PhD study. So these are the things ये that you जो can. फिलिशियन, ये इनके बारे में बता सकते हैं कि ये इनके साथ आपने काम किया था लैब लैब हाँ, डॉट of एआई में? course. Yeah, of course. टीम मेंबर्स थे या टीम लीडर? ये टीम मेंबर्स भी, एक तो टीम मेंबर था जो समीउल्ला, आई थिंक समी नाम है उसका। वो आई डू रिमेम्बर, एक साल पहले उनके साथ टीम में हमने काम किया हुआ था। अभी भी वो मेरे मेरे साथ कांटेक्ट में है। और जो दूसरा बंदा है फिलिसिन डोल्फ, इवन ही वाज माय टीम मेंबर and one hackathon and other hackathon I was his team member. So okay, anybody with a question? किसी का कोई क्वेश्चन है? सर मेरा एक ओके। क्वेश्चन है। हम्म।
क्या हैकाथन में पार्टिसिपेशन के लिए आपके पास कोई प्रोडक्ट होना चाहिए? लाजमी है कि आप कोई बना के पेश करें, या मतलब ये है कि आप जस्ट पार्टिसिपेट करें? Okay, as we have discussed in the earlier slides, आपको सिर्फ आपका इंटरेस्ट होना चाहिए कि आप हैकाथन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, बस आपके लिए ये काफ़ी है। डॉक्टर जफर तो कहते हैं कि आपको अगर प्रेजेंटेशन बनाना आती हो, ये प्रेजेंटेशन मैंने बनाई हुई है, तो ये एक वैल्यूएबल, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट, जो भी प्रोजेक्ट बन रहा होता है उसके लिए प्रेजेंटेशन की ज़रूरत होती है। उसको डेमो डेमो देने के लिए उसकी लाइक वो प्रोजेक्ट जो होता है, वो प्रेजेंटेशन जो होता है, वो हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं जजेस को। तो आपकी अगर प्रेजेंटेशन स्किल है, आप ये स्लाइड्स बना सकते हो, तो ये तो बहुत बेनिफिशियल पॉइंट है। अगर आप बोल भी सकते हो, इंग्लिश में बात भी कर सकते हो, तो इट इज़ आल्सो वेरी गुड। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, यहाँ पर मे बी ऐसे स्टूडेंट्स हो जो कि सोच रहे होते हैं कि इंग्लिश जो है ये आपको बहुत फ्लुएंट आनी चाहिए। नो, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर पार्टिसिपेटिंग इन हैकाथॉन्स। इंग्लिश आपकी ज़रूरी नहीं है कि आपकी इतनी स्ट्रांग हो कि आप दूसरों को या फिर नेटिव स्पीकर्स को इम्प्रेस करें। नहीं, मैंने ऐसे बंदों के साथ भी पार्टिसिपेट किया हुआ है कि obviously we were in a hackathon. There were few people from UK or US, and also हमारे पास इंडिया से भी दो तीन बंदे थे। तो वो जो बात कर रहे होते थे तो मैं ट्रांसफर कर रहा होता था हिंदी, लाइक उर्दू और हिंदी, दीज आर सिमिलर इन स्पीकिंग। तो वो भी बंदे चलें, अगर आपके पास स्किल है, आपकी ये बैरियर आपको नहीं रोक सकता है हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करने से। कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, आप इंग्लिश लर्न कर सकते हो वेरी इजीली। ऑब्वियसली वी आर all are professional student, we can even introduce ourselves. That would not be much fluent, but you can say something very easily in English. So fluent English आनी ज़रूरी नहीं है, हाँ इंग्लिश आनी ज़रूरी है। तो इंग्लिश तो सबको आती है माशाल्लाह। तो ये जहन में रखें कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप फ्लुएंट हो। Got that? ओके, डू एनीबडी हैव क्वेश्चन? ये जो चैट में कोई क्वेश्चन है, कोई रीड करें प्लीज। कर देती हूँ। प्लीज। The hackathon, which is happening from 3 to 5 May, it is titled is 12 Labs. Will you suggest to participate in that? Because I could go select only those hackathons which are better for your profile. अच्छा, हैकाथॉन कोई भी होना, आपको अगर मौका मिले, अगर आपको इंटरनेशनल टीम मिले, आप जाएं, आप वहां पर पार्टिसिपेट करें। आपको ऑब्वियसली सर्टिफिकेट तो मिलता है, लेकिन आप इवन जो एक्सपीरियंस बंदे होते हैं, आपका इंटरनेशनल टीम के साथ एक मीटिंग भी हो जाए ना एक वीक में, आपके लिए ये भी बहुत बेनिफिशियल है। आप जस्ट वहां रहें, जहां उनको लेसन करें, लाइक वो क्या कह रहे हैं, किस तरह डिस्कस कर रहे हैं और किस तरह अप्रोच कर रहे हैं एक प्रोडक्ट को बिल्ड करने में। वो लाइक वो किस तरह से एक प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं, किस तरह से टास्क असाइन करते हैं। तो ये ना देखें कि टाइटल क्या है या फिर कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो, अगर आप सी एस बैकग्राउंड से नहीं हो, तो आपको इन चीज़ों पे फोकस नहीं करना चाहिए कि किस एरिया का या फिर किस डोमेन का ये हैकाथॉन है। तो आप जाएं, आप वहां सिर्फ एक, अगर इंटरनेशनल मीटिंग में भी 1 घंटे के लिए रहे ना, ये भी बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। डज इट मेक सेंस मिस्टर गुलाम? ओके, तो यहाँ पर एक दो बातें लास्ट में ऐड करना चाहूँगा कि ऑलवेज जब हम आप इस केपेबल हो जाएं कि आप अपना टीम बनाएं, आप खुद पार्टिसिपेट करें, लाइक आप खुद अप्रोच करें टीममेट्स को, तो वहाँ पर अगर आपको हैकाथॉन जीतना है, ये तो पार्टिसिपेशन के बारे में बात हो रही थी, आपको अगर हैकाथॉन जीतना है तो यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट हुए होते हैं, लेट मी शो यू।
if you really want to win a hackathon, then what you can do, what is my approach? ये जो लीप्स हैकाथन है, हाँ लीप हैकाथन है, यहाँ पर 94 प्रोजेक्ट्स हैं, आई डू रिमेम्बर, आई थिंक ये 94 है almost. Somewhere they will have mentioned submissions. ओके तो आप लोगों को यकीन नहीं होगा, ये सब जो प्रोजेक्ट्स हैं ना, ये मैंने ओपन किए हैं, ये मैंने चेक किए हुए हैं, और मुझे आइडिया हुआ कि अच्छा किस तरह के ये प्रोडक्ट लोगों ने बिल्ड किए हुए हैं और किस तरह का उनका अप्रोच रहा। तो आप लोग भी इसी तरह प्रोडक्ट देखें, अच्छा ये टीम है, इसने किस तरह का आइडिया लिया हुआ है, किस तरह उन्होंने काम किया हुआ है, तो इट विल प्रिपेयर यू फॉर द नेक्स्ट हैकाथन, फॉर योर नेक्स्ट स्टेप, दैट हाउ यू कैन अप्रोच अनदर प्रॉब्लम। यहाँ पर ऑब्वियसली जो विनर्स होते हैं उनको लाजमी चेक करें कि अच्छा इस हैकाथन में, क्योंकि ये बहुत बड़ा हैकाथन था, आई थिंक इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा था, या दीज आर द 96 एप्लीकेशंस, और इतने सारे टीम्स थे और इतने सारे एप्लीकेशंस थे, तो एप्लीकेंट्स थे। आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि इन एप्लीकेंट्स में कितने एक्सपीरियंस इंडस्ट्री से लोग आए हुए होंगे। आई थिंक $50,000 was the price of this hackathon। तो इसी तरह से एप्लीकेशंस देखें, अगर कोई इंडस्ट्री से बंदा है जिसका 20 years प्लस एक्सपीरियंस है, वो अगर चाहें कि मैं एक आइडिया प्रेजेंट करूं एक हैकाथन के लिए, तो आप लोग सोच सकते हैं कि वो किस तरह से आइडिया प्रेजेंट करेगा और किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ये देखें, ये दिस इज द फर्स्ट विनर, यू कैन चेक इट आउट, मरमर, आई थिंक इट वाज द अरेबिक समथिंग problem. Okay, this one the third, this is the second. So these three application you must do check these three. So आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से ये आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रिपेयर करेगा। और always always think of an idea that aligns with the sponsor। अगर ओपन एआई एक हैकाथन स्पॉन्सर कर रही है, तो उनका चैलेंज देखे कि उनका हैकाथन का चैलेंज क्या है, उस चैलेंज को ट्राई करें कि सॉल्व करें। यहाँ पर वो क्लियरली मेंशन करते हैं कि हैकाथन चैलेंज अबाउट 12, दैट वन, हैकाथन चैलेंज, ये होता है चैलेंज। आप इस तरह का आइडिया लेके आए जो इस चैलेंज को सॉल्व करें या फिर इस चैलेंज के साथ अलाइन हो, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं हैकाथन को विन करने के लिए। और ऑलवेज build your team with international people। It will give you a lot of experience, exposure, LOR, knowledge, and a lot of things। Okay, मेरे पास तो जो एक्सपीरियंस रहा, लाइक जो मैंने आईकोड गुरु से सीखा और जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा, वो मैंने शेयर किया। किसी का कोई क्वेश्चन अगर ना हो तो फिर हम एंड करते हैं अपने सेशन, इस वर्कशॉप को। I hope this workshop helped you, and I hope you enjoyed that a lot। सर I लास्ट tried क्वेश्चन to make it। सर हम अगर खुद टीम लीड करके खुद हैकाथन जीत सकते हैं, अगर हम खुद टीम Of लीड करें या course। कुछ? मेरी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा थी। मैंने जब 2-3 हैकाथन्स में पार्टिसिपेट किया, तो फिर मैंने एक खुद टीम बनाई जिसमें एक बंदा था नाइजीरिया और समथिंग फ्रॉम दैट कंट्री, एंड 5 स्टूडेंट्स जो थे वो आईकोड गुरु से थे। तो मैंने वो टीम लीड किया, वो हैकाथन भी विन किया, फर्स्ट प्राइज हमने गेट किया, लाइक आई वोन दैट इज कॉल्ड द नेम ऑफ दैट हैकाथन इज वेब जीपीयू हैकाथन। तो इट इज ऑब्वियसली पॉसिबल। ओके सर, थैंक यू। ओके, और एक बेनिफिशियल बात मैं बताऊं, मैंने लाइक मेरा 2 years का एक्सपीरियंस रहा है वेब डेवलपमेंट का, एक इंडस्ट्री में, पाकिस्तान की जो कंपनी है मोबीवोन नाम है उसका, वहाँ पर मैं 2 साल जो मेरा एक्सपीरियंस है एज अ वेब डेवलपर रहा है। तो इस दौरान मैं यूनिवर्सिटी में भी था और हैकाथॉन्स में भी पार्टिसिपेट कर रहा था। तो डॉक्टर जफर ने मुझे कहा कि ये जॉब छोड़ दे, ये आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि योर बैचलर इज योर फुल टाइम जॉब। I obeyed Dr. Zafar, and
अभी मुझे लग रहा है कि ये जो 20 हैकाथॉन्स में मैंने पार्टिसिपेट किया हुआ है और ये जो 2 ईयर की मैंने जॉब इंटर्नशिप ऑफ लोकल कंपनी ये मैंने किया हुआ है, इसमें बेनिफिशियल जो हैं जिसने मुझे एक्सपोजर में या फिर लर्न करने में या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, नेटवर्किंग बिल्डिंग, तो नेटवर्किंग और कम्युनिटी बिल्डिंग में जो हेल्प किया हुआ है वो ये जो 20 हैकाथॉन्स हैं इन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया हुआ है और प्राइजेस भी मिले हैं और रिकग्निशन भी मिली हैं। तो न कि ये जो मैंने 2 years वेस्ट किए हुए हैं, आई वुड से दिस वाज नॉट द वेस्ट ऑफ टाइम, but like compared to hackathons, obviously there is nothing. So don't waste your time, always try to participate in hackathons once in a month. That is very useful, I would say. Okay, तो किसी का कोई क्वेश्चन है? We can take questions, otherwise we would move towards the end. You guys can add comments on my this explanation process. I tried to explain things in a very friendly mood, in a very better way. All right, so ma'am, I think किसी का कोई question नहीं है. Thank you, sir. You explained very well what are hackathons. एक चीज है जो मुझे लगा कि अगर आप ड्राफ्ट से हैं कोई एक या दो पिछले हैकाथॉन्स में आपको जो अलॉट मिले हैं, तो अगर वो आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दें. Okay, I will share a draft on Slack. Okay, so you guys can. और जो हमारा चैनल है 5 PM सर्विसेज ऑफ, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, बट वहाँ पर आप लोग भी यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं. वहाँ पर मैं आपको वहाँ पर पूछें, मैं वहाँ पर आपको एक ड्राफ्ट भी दे देता हूँ और साथ में वो वहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि इस चीज़ से हेल्प ले सकते हैं. Yes, sir. Thank you so much. Okay, you all are welcome. Thank you all for being here. So we are going to end the session now. Okay, Ma'am Amna, are you there? Yes, sir. Okay, should we end the session? Yes. Thank you, sir. Thank you, sir. All right, welcome.